Okay guys, so let's see today's daily problem. This is Leetcode daily problem, keys and rooms, right? Here you have been given a kind of a 2D array where let's see what the problem statement is. Basically, you have an access to the first room, and first room can contain some keys to other rooms. For example, if one is present, it contains the key from the it's zero indexing basically. So this is not first room, this is the zeroth room, right? And this is the first room where you can find the key of second room, and the second room where you can find the key of third room, and third room, yeah, that's all. You don't need to find the key for fourth room because fourth room doesn't exist. Like zero indexing is this. And for example, if you go over here, you are already in the zeroth room. You have a key of first room and third room, so you can go into first room, you can go into third room. uh, if you go into first room, you can find the key for the zeroth room, okay, which you don't need. First room you are already in, you can find the key for third room, so third room also you don't need because you already have it. So from third room you can go to second room, but there is a thing that you cannot go to this room. This is the first, second, zeroth, one, two, three. Okay, sorry. So from here you can go to this third room, and from this third room you can go to only zero. So there is no way to reach the second room. There is no one containing two basically other than this. So you are not entering this. So how can you get this two? Basically, this is the key. So you have to get the basically there are n rooms labeled from 0 to n minus 1. All rooms are locked except the zeroth room which you are currently in. Your goal is to visit all the rooms. So you have to tell whether you can visit all the rooms or not. Okay? True or false. However, you cannot enter the room without its key. So you will find its key. For example, now you are finding key for one. You will find a key for two. Then you will go. You find the key for three. You will enter three. Right? When you visit a room, you may find a set of distinct keys in it. Each key has a number denoting which room it's unlocked. Given an array, you have to tell whether you can visit all rooms or not, otherwise false. So, for example, again, like I'm taking this. I think you guys have understood like basically what the question is, but still, let me just show you what will be happening. First of all, I'll be going into this room. Okay, I'll create a set that okay, I have which keys I have, one and three. Then I'll say okay, I can go to first room. Then I can add all the keys from present in this set to this room. So there is no point of adding three because that's already is zero. Also there is no point to add because zero is already visited, but still if you want you can add. One is also there, so no need to add one. So this is all like what you can visit. But now you'll see okay, I could have also visited the third room. So if you visit the third room, you will say okay, it's zero. So again, like there is no need to add, zero already is there. So this is the final set which you are having, which doesn't contains two. So that's why you know your two is not visited. I will also keep making updating my visited array. So every element will get visited. One, two, oh, sorry, one, two, three, four. There are three rooms only, right? Zero, one, two, three. So zero के नीचे one लिखा होगा. This is one. This is two. This is three. So zero is visited, one is visited, two is not visited, three is visited. So that's the whole thing. And simple है, it's very simple. First of all, you will this is kind of a BFS traversal because मैं 1 3 देखूंगा. पहले मैं 1 के सारे चिल्ड्रंस पे जाऊंगा, उनको ऐड कर दूंगा, फिर मैं 3 के सारे चिल्ड्रंस पे जाऊंगा, उसको ऐड कर दूंगा. बट फिर मैं इन सबको देखूंगा जो कि ऑलरेडी मैं देख चुका हूँ. तो विजिटेड वो नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो वेक्टर विजिटेड इज रियली इंपॉर्टेंट. एंड विजिटेड n comma 0 again. And for auto, I in rooms डॉट जीरो मेरे लिए ओपन है. एंड इसमें मैं जाऊंगा, अपना क्या करूंगा, क्यू में ऐड करता जाऊंगा, क्यू डॉट पुश आई. एंड इसको विजिटेड मार्क करता जाऊंगा, विजिटेड डॉट आई प्लस प्लस, राइट. एंड क्यू में बना लेता हूँ, क्यू ई यू ई पेंट यू. And while your queue ka size is there, queue is not empty, so I'll take out one element, auto f is equal to q dot front and q dot pop. And what I'll do, I'll go to all the children of this f. Okay, for auto I in you can say rooms of f. This is all the children of f, and if it is not already visited, then you will say add this into q dot push I and visit I.
That's about it. You can make a visited of 0 equal to 1 already, and visited this equal to this, and that's about it. You have visited this, so that's about it. You will go for auto I in visited. If someone is still 0, if I is equal to 0, you will return 0, otherwise you will just return 1. That's about it. How simple it is, right? It's created. Okay, n is not defined. Anything else not defined? You will go visited q, add all the into q, add into visited, and q dot size, f dot front we will take out. We'll go to all childrens, we'll push all the childrens. We see if someone is still not visited, then the answer is 0, otherwise the answer is 1. That's about it. Pretty good efficiency. Okay, let's move to second GLG problem. This is also a very simple question. What you need to do, you have been given an array and of n size. You want to tell the maximum value of this array I minus array j ka mod plus I minus j ka mod, where j is greater than I. So I minus j ka mod kya hoga? Is this like not a, is this a constant value? Yes, it is a constant. It will be always be j minus I, because j is greater than I, right? So इसका जो difference आएगा, that's j is always greater than this, so this would be this. So now you got the thing that okay, this is fixed. Mod of ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है? Mod of a of I minus j, it can be of I minus j, और it can be of j minus I, plus ये तो फिक्स है j minus I, ठीक है? So दोनों केस ले लेते हैं. फर्स्ट केस when a of I, ठीक है, माइनस ए ऑफ जे प्लस जे माइनस आई है, राइट? तो इसमें क्या हो रहा होगा हमारा ए आई माइनस आई प्लस में, सॉरी माइनस में ए ऑफ जे माइनस जे, राइट? समथिंग लाइक दिस हैपनिंग. एंड सेकंड टेस्ट, सेकंड जो केस होगा हमारा वो होगा कि आपका ए जे बड़ा है, राइट? सो इट इज मोर सिंपलर, ए ऑफ जे minus a of I plus j minus I. So it would be something like aj minus j plus ai minus I. तो अभी मेरे को वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, या तो इसकी, ठीक है? जो भी मेरे को मैक्स का मैक्स देगा मैं उसको ले लूंगा. तो फॉर एग्जांपल देखो, एक ही डायरेक्शन में हमें मूव करना है, बिकॉज आई इज ऑलवेज लेस देन जे. नाउ आपको क्या करना है, एक मैक्स वेरिएबल स्टोर करते चलना है. mx इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एम एक्स कॉमा, मैक्स किसका चाहिए आपको? दोनों का ही मैक्स चाहिए बल्कि. तो सो एक होगा कि ए ऑफ आई माइनस आई का मैक्स, और आपको देखो माइनस क्या हो रहा है, ठीक है? ए ऑफ जे, यू आर करंटली एट पर्टिकुलर एलिमेंट, लेट्स से जे पे. इफ यू आर एट जे, तो आप ये तो देख रहे होंगे, ठीक है? आप ये देख रहे होंगे कि जो रिजल्ट है आपका, रिजल्ट इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ करंट ऑफ आर रिजल्ट. तो एक ऐसा बना लेते हैं, ठीक है? आर कॉमा एक आंसर यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है? ए ऑफ जे माइनस जे, तो इसका ऐड हो गया, ठीक है? प्लस में समथिंग लाइक दिस, प्लस में समथिंग लाइक दिस, ए आई माइनस जे. तो मेरे को ए आई माइनस जे की, सॉरी ए आई माइनस आई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो अभी ऐड करूंगा तो वो भी मैक्स हो जाएगा, ठीक है? बट जो जहाँ पे ये माइनस हो रहा है, यू नो, ए आई माइनस आई पे मैं हूँ, जे माइनस आई, दिस इज आई माइनस जे माइनस आई, तो ये ऐसे हो जाएगा. और इस केस में ये ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? माइनस ऑफ ए ऑफ जे माइनस जे, राइट? एक बार मेरे को ये बड़ा चाहिए, ठीक है? पहले का बड़ा स्टोर करके रखो इसका, और इसका छोटा स्टोर करके रखो, यू नो, दिस वुड बी, यू नो, दिस इज अ फिक्स एलिमेंट, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है? सो एक आपको किसी चीज से माइनस करना है फिक्स को, तो वो मैक्स होने चाहिए. मैक्स माइनस फिक्स करोगे तो आपका पॉसिबिलिटी है कि आंसर बड़ा आएगा, ठीक है? एंड अगर आपका ये है फिक्स्ड है, आपको प्लस करना है ये, तो इसमें भी मैक्स ही होना चाहिए, आई थिंक. या एक है एम एक्स माइनस में दिस जे माइनस जे, ठीक है? और एक m2 बना लेते हैं फिर, कॉमा ए ऑफ आई प्लस में आई.
अच्छा सॉरी, दिस इज माइनस यहाँ पे, बिकॉज फाइव भी आपका माइनस का है, और यहाँ पे दिस इज प्लस, ठीक है। नाउ आपको पुराने का मिनिमम स्टोर करके रखना पड़ेगा फॉर दिस, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ए जे माइनस जे पॉजिटिव है, माइनस ऑफ ए आई आ गया ना, तो ए आई प्लस ए आई आई का आपको मिनिमम स्टोर करके रखना पड़ेगा ए आई प्लस आई का, और इसको हम ए जे माइनस जे में से घटाएंगे, ठीक है। ए जे प्लस जे, सॉरी, प्लस जे माइनस में, यहाँ पे प्लस है यार, ठीक है, एज यू कैन सी, क्योंकि जे भी आपका प्लस का, जे तो हमेशा प्लस का है, ठीक है। ए जे यहाँ पे प्लस का है, ठीक है। सो ए जे प्लस जे माइनस एम एन, जो भी होगा एम एन, ठीक है, एम एन, एम एन। तो that's about it, yeah, that's about it, you can just return now r। तो बेसिकली क्या करना था, सबसे पहले आपको देखना था कि दिस इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टू इक्वेशंस, तो इन दोनों में से जो भी मार्क्स वैल्यू दे रही होगी वो ले लेंगे। तो पहला एक जो ए जे वाला पार्ट, तो यू नो द करंट एलिमेंट विच यू आर एट, तो ऑब्वियसली जे बड़ा है तो जे मैं करंट रखूंगा, और इससे पहले की मेमोरी मेरे पास स्टोर्ड है मैक्स और मिन, तो उसके बेसिस पे मैं आंसर निकाल सकता हूँ, ठीक है। और इंट एम एक्स को हम इनिशियलाइज करेंगे -1 ही 9 से, ठीक है, बिकॉज हमें मार्क्स लेना है। एंड एम एन को हम इनिशियलाइज करेंगे 1 ही 9 से, हमें लेना है। आर को तुम कुछ भी कर लो, 0 ले लो, ठीक है। रिटर्न आर, and let's try to sum this up. So that was all logic about this problem. You just need to transform this. Okay, what's the issue? AI not declared, R को A कर लो. Yeah, you just need to transform this equation into these two things and calculate the value for max. J not declared. Okay, it's let's see, because this is a current element, right? This is for storing the previous memory. This is for current element. Where is this problem? Okay. Anything else? What's happening, man? Okay. Your output this. Okay, why? I need the maximum of AI plus I. No. Maximum. Minimum of AI plus I. Maximum of AI minus I. I think you need to do it like this. Mx is equal to max of current mx minus AI minus I. What's the problem in this? I don't know. I just submitted this. What happened? Let's see. It will be some silly issue. Let's take this only. Mx is equal to mn is equal to 1e9, mx equal to -1e9, r equal to 0, no problem, 0 to n. I just took j over there. Minimum of aj plus j, and oh, okay, there is a issue over here. I need not to initialize it again and again. This is the memory basically. Max and m in mx or mn is basically, yeah, keep updating every time. What I did, yeah, that was completely wrong. Like silly mistake, you can say, but yeah, that's about it. Okay, guys. Okay, bye.